last lecture we have started with pin diagram, and we have done uh, many pins, almost half of the pins we have done, more than half pins. So this part we have done all this side pin, all first 20 pins we have finished, and from this side we have done address lines. These all pins we have finished, and these lines also we have done, and then ALE we have done, and clock signal and reset inbar we have done from this pin diagram. Now we will start with status pins S0 and S1. Okay, after finish this we will revise all pins once more. So first we will start this S0 and S1 pin. Now these two pins are called status pin. Okay, these two pins tells the status of microprocessor, means right now what microprocessor is doing which function. Okay, what function microprocessor is doing, you can uh, uh, you can get the idea of what microprocessor is doing from these two status signal. If you can see this table here, if your these two inputs are 0 0, means when both are low, then it is in the halt condition, means it is in the stop mode. Okay, and when it is 0 1, then you are writing something, means microprocessor, not you are, means microprocessor is writing something. Microprocessor is writing to output device, or it can be in the memory, means you are storing something in the memory, or it can be output devices. And when it is 1 0, then means it is reading something. Reading something means you are reading from input device, or something is there in the memory and that you are extracting. Or fetch means opcode fetch. See, your instructions are stored in the memory, so fetching is always from memory. So this status signals tell the operation that right now what microprocessor is doing. But these two signals is not giving clear picture of these write and read signals and other. See, we have total 8 machine cycles. Now you are familiar with the word machine cycle. Machine cycle is the sub part of your instruction. It can be any read operation, it can be any memory operation, it can be any reset operation, acknowledgement operation, interrupt acknowledgement operation, any. So microprocessor is having 8 machine cycle, and in one instruction you can have maximum 1 to 5 machine cycles, right? So from this status pin S0 and S1, if you see this 0 and 1, this is right, but from where, मतलब where you are going to write, output पे लिखने वाले हो कि you are going to store in the memory. From this you cannot predict, or you cannot say कि writing कहाँ हो रही है. Same way reading is from input device or from memory. So this is also not giving the clear picture that reading is from where, from memory or from input devices. So what is the solution? So we have one more pin along with these two pins, that is IO M bar pin. Okay, this IOM bar pin, when you combine with these two pins, then you will be having 3 pins. And when you have 3 pins, so means 3 inputs, so you can have how many combination? 2 raised to the power 3 means you can have 8 combination, or you can say you can have 8 machine cycles or 8 sub operation कि जिस पे microprocessor work कर रहा है. Understood? So 8085 we are having 8 machine cycle due to these 3 status signal S1, S0 and IO M bar. Clear? So we have to combine this pin also, and from this pin also we can have one more information. See, this is a second generation microprocessor, और इससे पहले के जो microprocessors थे उसमें ये वाला pin नहीं था. This pin introduced in this processor only. And what is the use of this pin?
सी इन दिस व्हाट वी कैन से, आपको अभी मालूम है आपका एड्रेस बस कितना बड़ा है, इट इज ऑफ 16 बिट, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट आवर एड्रेस बस इज ऑफ 16 बिट एंड इट टेल्स द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, राइट। तो मेमोरी कैपेसिटी हमारी एड्रेस हमें पता है कितना था, 64 KB। कैसे आया था ये 64 KB? You are familiar with that 64 KB means you have 2 raised to the power 16 combination, and from this you are getting how many locations? 65,536 location you are getting. और एड्रेस रेंज हमने कैलकुलेट किए थे हेक्साडेसिमल में, इट इज फ्रॉम 00000 टू how much? FFF. These are our locations or addresses. तो एड्रेस बस क्या बताता है? इट टेल्स द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. तो मीन्स दैट मेनी लोकेशंस आर देयर, और मीन्स वी हैव दैट मेनी यूनिक एड्रेसेस ड्यू टू 16-bit एड्रेस बस. तो व्हाट हैपन to peripherals? Peripherals are also have some address. ठीक है, अगर मैं ये सारे एड्रेस जो है 000 से FFFF तक सब मेमोरी के एड्रेस हैं, तो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ आवर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस? अगर सारे एड्रेसेस जो है इसको दे दिए मेमोरी को, तो बाकी एड्रेसेस कहाँ हैं? इनपुट को कहाँ से मिलेगा एड्रेस? व्हाट इज द एड्रेस ऑफ आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस व्हिच इज कनेक्टेड विद दिस आईसी? so we don't have extra address because all we have given to memory. तो जब पहले के माइक्रो प्रोसेसर थे उसमें this scheme was there, memory mapped IO, where we have different addresses for input output and separate addresses for memory. Let's say I'm taking first 10 addresses for input devices. I have reserved first 10 addresses for input or output devices. Okay, and from 0008, okay, from this to last location I have given to memory. Clear? So in this scheme or in the earlier microprocessor, the scheme was we have separate addresses for input output devices and separate addresses for memory. We don't have same addresses for input. अगर मैंने let's say keyboard को address 009 दिया है, and if this address is there on the address bus, so it will activate keyboard. There is no such address for memory location. Understood this concept? In case of memory mapped IO, we have separate addresses for input output devices and separate addresses for memory. तो ये फर्स्ट 10 लेट से मैंने किसको दे दिए? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, और 00A से FFF तक के एड्रेसेस आई हैव गिवन टू मेमोरी. Understood? So that was the scheme of memory mapped IO. फिर जब 8085 माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन हुआ तो मैन्युफैक्चरर हैज इंट्रोड्यूस दिस पिन IOM बार. इस तरह से बुक में है ये IOM बार. तो दिस पिन इज बेसिकली has means we have advantage for that कि अगर ये पिन मैं यूज करती हूँ तो I can use all addresses from 000 to last location for memory as well as for input output. Means I can give any address to input as well as to memory. तो मुझे सेपरेट देने की जरूरत नहीं है. लेट्स से 009 जैसे मैंने कीबोर्ड को दिया था एड्रेस, ठीक है, और 009 अब मेमोरी लोकेशन भी है. मीन्स दिस फ्रॉम 000 to 009 is also the part of your memory addresses. Understood? So how will I differentiate, or how we will come to know that this address is for memory or this address is for input output devices? So that we can get with the help of this pin. तो इस पिन पे जो भी हम सिग्नल देते हैं, this is IOM bar. तो if you are giving here 0, तो IO हो जाएगा 0 और M bar पे 0 bar.
तो क्या हो जाएगा 0 और 1. तो 1 किसको मिला? मेमोरी. मीन्स मेमोरी इज सिलेक्टेड एंड दिस एड्रेस 009 ऑन द एड्रेस बस इज फॉर मेमोरी. ओके. और अगर आप यहाँ पे 1 देते हो तो क्या हो जाएगा? IO विल बी 1 एंड IO बार जो M बार है दैट विल बी 1 बार. तो क्या मिलेगा आपको? 1 और 0. So that means who is selected? We have selected input output devices. That means 009 is the address for input. Understood? So this is we can say that we can utilize all the memory location. In earlier scheme, if I have given the addresses to input output devices, so that addresses I cannot use for memory. But with the help of this pin, I can use all the addresses for input output as well as for memory. तो ये जो स्कीम है जो 8085 में इंट्रोड्यूस हुई उसको हम क्या बोलते हैं? आईओ मैप्ड आईओ. तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है बहुत बार. What is IO mapped IO and memory mapped IO and which scheme 8085 is using? So 8085 is using which scheme? IO mapped IO. So in IO mapped IO we have separate. We don't. We have same address for input output devices as well as for memory. तो यहाँ पर वो कौन उसको डिफ्रेंशिएट करेगा? IOM bar signal. It will tell whether the address on the address bus is for IO or for memory. Clear? Krishna, you have any doubt? No, ma'am. Okay. So understood the function of this pin IOM bar. So IOM bar pin is basically differentiating the address. The address is for which device, whether it is for input output or for memory. So with the help of this scheme, we can use same addresses for input output devices as well as for memory. But in this case, memory mapped IO, we have separate addresses for input output and for memory. The address which is given to input or output any devices cannot be used as a memory address. Clear? तो अब ये पिन का एक तो ये फंक्शन हो गया. बेसिकली इट इज डिफरेंशिएटिंग वेदर द एड्रेस ऑन द एड्रेस बस इज फॉर मेमोरी और इनपुट आउटपुट. एक तो ये हो गया. और ये जो है व्हेन इट इज कंबाइंड विद योर स्टेटस सिग्नल S0 S1 के साथ जब ये कंबाइन होती है then it gives you 8 machine cycles. Okay, it will give you 8 machine cycles. Clear? तो these are 8 machine cycle. ये 9 है टोटल. तो ये जो लास्ट 2 है ये सेम है. ओके, होल्ड और रीसेट के लिए. अब आपने ये स्टेटस सिग्नल में देखा था फॉर राइटिंग वी हैव विच स्टेटस फॉर राइटिंग. ये वाला देखा था. स्टेटस फॉर राइटिंग S1 is 0, S0 is 1. Okay, here S1 is 0, S0 is 1 for writing operation. But writing from where? Writing from writing to in output or to memory. कहाँ पे आप writing कर रहे हो? That is decided by this IOM bar pin. If it is 1, that means you are writing from IO devices. Okay, you are writing to our input output devices. If it is 1, आप देख रहे हो यहाँ पे 1 है. ये this is the status of write. But write from write to where? Write to where? If it is 1, it is to out input output devices. And if it is 0, तो राइटिंग किस में कर रहे हैं आप? मेमोरी राइट. Okay, so you are writing something in the memory, and if it is 1, then you are writing into some input output devices. Okay, and memory read का क्या status था? 10. But this reading is from where? From input output device or from memory? So if the reading is from input output devices, this signal should be 1. And if the reading is from memory, then this signal should be 0. Clear? And what is the operation for opcode fetch? Fetch था ना last में, that is 1 1. So opcode fetching means instruction reading is always from memory, so this signal should be 0.
ओके. एंड इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट हमने पढ़ा है, ये सिग्नल दैट इज INTA बार. Interrupt acknowledgement signal किस लिए है? It is a signal which is the acknowledgement signal given by microprocessor to the peripheral after getting interrupt signal from peripheral. Clear? तो उसके टाइम पे यहाँ पे ये तीनों 1 1 होने चाहिए. और क्या था? हॉल्ट था 0 0 फर्स्ट कंडीशन. नाउ ये जो कंडीशन है फ्लोटिंग कंडीशन और ये अनयूज्ड कंडीशन, hold we will have to cover. Hold and HLDA pin is used for DMA devices, direct memory access devices. तो वो हम पढ़ेंगे. तो unused pin को you can write with X. In some books it is given X. X बताया था मैंने while doing flip flop. It is don't care condition. तो जब भी hold होगा या reset मशीन साइकिल एग्जीक्यूट हो रही होगी, तब इस पे आपको कुछ भी हो, it doesn't matter. And now what is तो floating? Floating में some in your books, in your engineering books or if you see on net, तो यहाँ Z लिखा है. Z मतलब high impedance state or high resistance state. Or we can so say, ma'am, बोलो. what's the difference between hold and reset? Hold, I will tell you. Hold जो है signal that is generated by DMA signal. We have done this small topic on this DMA, direct memory access, where you can transfer data directly from one place to another. Means if you transfer data from input to memory, okay, a large amount of data you are transferring from input device to memory, then everything whatever you are giving to from taking from input, it has to go via microprocessor. But if it is just a transfer and there is no processing on that data, then why we need processor in between? Okay, we don't require processing because we are not doing any processing task. If we are not doing any processing task, so we can remove processor from that transfer. तो उसको हटाने के लिए तो we have a DMA device or a DMA controller that will control or that will transfer the data directly from one place to another without processing. तो वो जो DMA एक्टिवेट जो होता है वो होल्ड सिग्नल से, क्योंकि जब आप डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हो तो व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? यू नीड एड्रेस बस सो दैट यू कैन एड्रेस दैट डिवाइस कि आपको डेटा कहाँ ट्रांसफर करना है. एंड आफ्टरवर्ड यू नीड डेटा बस टू ट्रांसफर डेटा. सो मीन्स यू नीड द कंट्रोल ऑफ buses. ठीक है. And that control of buses is requested by DMA by sending hold signal. तो hold signal DMA send करता है माइक्रोप्रोसेसर को, और जैसे ही hold signal मिलता है तब उसका कुछ भी स्टेटस मैटर नहीं करता. माइक्रोप्रोसेसर will complete its current machine cycle और उसके बाद it will give the control to that DMA device. Understood? And reset is also basically to reset the microprocessor kit. तो जब आपने reset कर दिया तब आपका क्या status होगा? It will not matter S0 पे क्या, S1 पे क्या. Once you press the reset button, all will going to reset. Clear? तो ये hold और reset जो है, इसके लिए मैं आपको ये बता रही थी कि S0 और S1 पे क्या है. After getting this signal, it will not matter. So that's why it is represented with X, don't care condition. In somewhere in the books it is written unused because we are not bothering about the status on this after getting hold or reset signal. Okay. And this floating means Z. Z means high impedance state or high resistance state, or we can say that ट्राई स्टेटेड स्टेट मैंने बताया था आपको, जैसे कि बफर में आ जाता है ट्राई स्टेटेड स्टेट. बफर बताया था कि बफर इज व्हाट? इट इज बेसिकली द टू टाइम्स इन्वर्जन सर्किट. ओके. इन्वर्टर कैसे रहता है? नॉट गेट. नॉट गेट में आगे एक ये बबल होता है ना, तो हियर वी आर गिविंग ए, so what we are getting here? A bar. Okay. And if you pass it again from one more not gate, then it will be A double bar and again you are getting A. ठीक है. तो इन दोनों को combine करके we are getting this buffer.
Clear? So this buffer is giving the same signal A here and A here, but after holding that signal for a small period of time. तो ये जो बफर है ये हर एड्रेस बस और डेटा बस में जहाँ जहाँ एड्रेस और डेटा बस जाएंगे, whether it is going to input device, output device, memory, everywhere यहाँ हर एक लाइन 16 लाइन है तो 16 buffers are there for input, 16 buffers are there for output and 16 buffers are there for memory. इस तरह से हर एक लाइन पे हर एक डिवाइस के साथ these buffers are connected. तो ये जो है कैसे रहता है, it will go in tri-stated mode. तो ट्राई स्टेट ये सारे बफर्स क्या होते हैं, ट्राई स्टेट बफर्स होते हैं. ट्राई स्टेट मतलब इट हैज 3 स्टेट. तो ये तो हो गया इनपुट स्टेट, आउटपुट स्टेट और एक नेक्स्ट स्टेट आती है विच वी कॉल्ड एनेबल स्टेट. राइट. तो इस स्टेट पे जब 1 होता है तो इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्मल बफर की जो भी इनपुट पे है वो आउटपुट पे आ जाएगा. बट अगर इस पे 0 होता है, इफ इट इज 0, then the resistance of this buffer will increase and it will not allow to pass input to output. तो देर इज नो आउटपुट सिग्नल. सी अगर मैं इनपुट से डेटा ट्रांसफर कर रही हूँ तो बसेस तो मेमोरी के साथ भी कनेक्ट है, बस तो आउटपुट के साथ भी कनेक्ट है. तो जब इनपुट के साथ मैं काम कर रही हूँ तो मेमोरी और आउटपुट डिवाइसेस के सारे बफर्स कैसे हो जाने चाहिए, इट शुड बी इन ट्राई स्टेट मोड कि दे शुड नॉट ट्रांसफर बिकॉज दैट एड्रेस इज फॉर इनपुट. Okay, so it should activate by chip enable line and then data transfer should be there and other should be in tri-stated mode. तो उसको हम high impedance mode भी बोलते हैं where the resistance of the circuit will increase. So resistance means oppose the flow of signal or oppose the flow of current. If its resistance is high then it will not allow to flow the current. क्लियर. तो फ्लोटिंग जहां जहां लिखा है दैट मीन्स इट इज इन हाई इम्पीडेंस स्टेट. तो Z से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और जो अनयूज्ड है इट इज रिप्रेजेंटेड विद X, कैपिटल X, दैट इज डोंट केयर कंडीशन. तो इफ यू कैन सी, so now we have these 3 status signals and these 3 status signals makes how many machine lines, the machine cycles? You have 8 machine cycles. ओके. तो किसी ना किसी मशीन साइकिल पे माइक्रो प्रोसेसर वर्क कर रहा है. तो हर एक इंस्ट्रक्शन में 1 से 5 तक, फ्रॉम 1 to 5 मैक्सिमम यू कैन हैव 5 मशीन साइकिल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वन इंस्ट्रक्शन. क्लियर. तो ये जो IOM बार पिन है ये बहुत बार एक्सप्लेनेशन के लिए आती है. तो you have to tell about that when the signal on this pin is low, then the address on the address bus is for memory, and if the signal is high then the address on the address bus is for input output devices. So in this we can use same addresses for input output and memory location, and when we combine this IOM bar signal along with S0 S1 status signal, then we will have 8 machine cycles that will tell currently the status of microprocessor, that right now what microprocessor is doing. Clear. I think clear this everyone to you. If you have any doubt, if some repetition is required, then I can explain. Ma'am, what's the difference in halt and hold? Like if the input for S0 and S1 is 0. Halt में you have specified that na, it is mentioned that this should be 0. Okay, but in case of hold, unused means don't care condition, whether it is 0 or 1 you need not to say. So even if both are 0, it won't matter. Means? Even if S0 and S1 are 0, it will still be hold. Yes. So if the signal is generated by DMA, then there will be no effect on this, whether it is 0 or 1. अगर ये 0 भी है, halt में भी ये प्रोसेसर था और अगर उसके बाद hold signal आता है, तो it will not matter whether it is 0 or 1. This will be considered as don't care condition. You need not to bother about the status signal.
right? Okay, ma'am. So these are 8 machine cycles. तो किसी ना किसी पे माइक्रोप्रोसेसर काम कर रहा है. ओके, तो S0 S1 से सिर्फ आपको पिक्चर मिलती है कि माइक्रोप्रोसेसर इज राइट नाउ डूइंग व्हाट, मींस इट इज डूइंग राइट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन, बट राइटिंग और रीडिंग फ्रॉम वेयर दैट विल बी क्लियर, और दैट इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग विद द हेल्प ऑफ IOM by signal. So when it is combined with this, so you will have 8 machine cycles जिस पे microprocessor work करता है. Now it is clear. Any doubt in these 3 pins? IOM by pin is important. 2 questions are there. IOM by pin, उसमें एक question एक pin में आता है, और दूसरा the difference between IO mapped IO and memory mapped IO. Right? Now next इसमें we have these 2 pins left. These 2 pins now we will discuss. That is hold and HLDA pin. Okay, these hold and HLDA pin, जैसे अभी मैंने बताया कि hold pin is basically initiated by, or signal is from DMA. These are DMA signal. These hold and HLDA. These signals are used by DMA controller. Now we have already discussed about what is DMA. DMA is a direct memory access. So it is a device that is used or helps to transfer data directly without using processor. क्योंकि हमने अभी बताया था कि as we have discussed that if we are transferring data and if we are not doing any processing, then there is no use of involving processor in the data transfer. So what we can do, we can transfer data directly with the help of DMA controller. But for that, DMA needs address and data buses, and that address and data buses, it is with 8085 microprocessor, because control of buses is with microprocessor only. So by sending hold signal, ये सिग्नल जो है माइक्रोप्रोसेसर को DMA it will send. So this is input signal which is initiated by DMA signal, that I need address and data buses for data transfer, right? So after receiving this hold signal, then HLDA will initiate, microprocessor will initiate this acknowledgement signal to that device DMA, that I have received your signal. जो भी उसका machine cycle है वो complete होने के बाद immediately it will transfer the control of address and data bus to that device. And after transfer of data, तो hold signal जो है DMA क्या कर देगा, zero कर देगा. जब उसको डेटा और एड्रेस बस चाहिए, that time it will activate this by sending 1 to it. And after transfer of data, it will send low signal or 0 to hold, जिससे क्या पता चलेगा कि 8085 को that DMA has finished its work. Now it's time to take the control of address and data buses back. Clear? So these hold and HLDA signal is for DMA transfer. Hold is generated by DMA and HLDA is output signal generated by 8085 as an acknowledgement signal for DMA. Clear? So these two, ये होल्ड पिन बहुत बार आई है. तो अगर होल्ड पिन आती है या HLDA पिन एग्जाम में आती है, कोई भी पिन आती है, तो यू एक्सप्लेन बोथ, बिकॉज बोथ आर इंटरकनेक्टेड. इफ यू आर एक्सप्लेनिंग अबाउट होल्ड, तो आप बताओगे ना कि उसको डेटा और एड्रेस बस मिलेगी कैसे, बिकॉज जब 8085 उसको एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा. और HLD एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो भी ऑब्वियसली आपको बताना ही पड़ेगा कि ये किसके भी हाथ में एक्नॉलेज कर रहा है, व्हेन इट इज गेटिंग होल्ड सिग्नल. सो वेदर इट इज होल्ड और HLD, यू हैव टू एक्सप्लेन बोथ पिन्स, अगर कोई भी एक भी पिन पूछा जाता है तो. ओके, अभी इसमें 3 पिन हमारे रह गए, दैट इज रेडी पिन एंड रीड बार एंड राइट बार पिन. नाउ रेडी पिन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी काफी बार पूछी रही है बोर्ड एग्जाम में. तो रेडी पिन क्या है, बेसिकली इट इज अ सिग्नल विच इज जनरेटेड बाय पेरिफेरल्स. बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि मैं CS2 के बोर्ड पेपर्स चेक करती हूँ,
बहुत सारे स्टूडेंट बोर्ड में भी और इवन कॉलेज में भी इसको रॉन्ग लिखते हैं. रेडी सिग्नल इज जनरेटेड बाय माइक्रो प्रोसेसर. नो, it is generated by peripherals that I am ready, because peripherals are slower than your 8085 microprocessor or any processor. Processor speed is always more as compared to your input output devices. So when they are ready, they will send the ready signals to processor, and then processor will communicate with those peripheral. अगर ready signal पे zero है तो microprocessor is ready but peripherals are not ready. तो that peripheral जब तक ready नहीं होता, microprocessor will send itself into wait state. ठीक है, अपने आप को वो वेट स्टेट में डालता रहेगा. जैसे ही पेरिफेरल रेडी होगा, इट विल both can communicate. So this is ready signal that tells that if that the peripheral is ready or not, and it is generated by peripheral to microprocessor that okay, I am ready, now we can communicate. क्लियर. तो ये हमने पिन कर लिया रेडी. उसके बाद हमारा ये रीड बार और राइट बार, दीज आर ऑल्सो कंट्रोल सिग्नल. ये क्या बताते हैं कि जो डेटा है बस पे, और जो बस पे डेटा आने वाला है वो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी को इंडिकेट करता है. रीड पिन दैट इज सिलेक्टेड इनपुट आउटपुट और मेमोरी डिवाइस इज टू बी रीड. हमने उसे रीड कर लिया है एंड द डेटा इज अवेलेबल ऑन डेटा बस. तो रीड बाय सिग्नल इज बेसिकली अ signal that it is active low signal. That's why I've written this dash. So it means in your book it is given with bar. ठीक है, रीड बार और राइट बार, दीज आर एक्टिव लो सिग्नल. तो यू हैव टू स्टार्ट विद दैट ओनली. इट इज एक्टिव लो सिग्नल एंड इट इंडिकेट्स दैट द सिलेक्टेड आईओ और मेमोरी डिवाइस is to be read and is ready for accepting data available on data bus. Or write bus signal क्या है? This indicate that data on the data bus is to be written into selected memory or IO location. कि जो डेटा था डेटा बस पे वो हमने आईओ डिवाइस या मेमोरी पे सिलेक्टेड इनपुट आउटपुट या मेमोरी पे वी हैव स्टोर्ड which was available on data bus. और read by में क्या है? That we have already read the data and it is available on data bus. So these are just a status signal that tells whether we have already read the data, we have already taken the data and data is available on now data bus. और write by क्या बताता है कि the data which is available on the data bus we are going to write into selected memory or input output location. Clear? So these all 40 pins we have done. ठीक है, तो ये जो सारे पिन्स हैं उसका एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है. आई हैव वन मोर लेक्चर, तो यू अगेन ज्वाइन. So I'll finish the revision part. First I'll finish this topic. We have one more topic here, that is functional block diagram.